हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Unacademy. दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. ये सीरीज उनके लिए है जिनको लगता है कि पॉलिटी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत होती है. एब्सोल्युटली नहीं. देर आर सिंपल वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट तो तुम्हें ये एकदम पोइट्री की तरह लगेगा, एकदम स्टोरी की तरह लगेगा. लेकिन ये बात इस स्टेज पर, स्पेशली इफ यू आर बिगिनिंग द पॉलिटी प्रिपरेशन, इवन सेइंग दिस इज फ्यूटाइल. इवन बोलना ये बेकार लगता है, बिकॉज एज एंड व्हेन तुम पॉलिटी का कोई भी टॉपिक देखोगे, बी इट फ्रॉम एनसीईआरटी, बी इट फ्रॉम लक्ष्मीकांत, या फॉर दैट मैटर तुम न्यूज़पेपर खोल के देखोगे, यू वुड फील कि इससे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है. मेनी ऑफ यू विल कॉल इट बोरिंग, बट आई विल नॉट लेट दिस हैपन. जो लोग भी मुझसे पढ़े, दे started out in the similar position but they ended up loving this subject. मैं चाहता हूं कि तुम लोग, स्पेशली जो लोग बिगिन कर रहे हैं अपनी पॉलिटी प्रिपरेशन, स्टार्ट फ्रॉम दिस सीरीज. छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे, रैंडम टॉपिक्स लेंगे, करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेंगे. वी विल नॉट फॉलो एनी बुक, वी विल नॉट फॉलो एनी प्रिंसिपल्स ऑफ ये पहला और टॉपिक होना चाहिए, द अदर वन नेक्स्ट वुड बी दिस. वी विल नॉट ऑल्सो फॉलो द टाइटल्स ऑफ लक्ष्मीकांत, वी विल ऑल्सो नॉट फॉलो द सिलेबस ऑफ यूपीएससी. लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैं तुम्हें द कॉन्क्रीट, द बेसिक, द फंडामेंटल टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी पढ़ा दूंगा. सो वेलकम टू दिस एंटायर मिशन, सिंप्लीफाइंग पॉलिटी फॉर बिगिनर्स. एब्सोल्यूट बिगिनर्स जो होंगे उनके लिए ये एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है. स्टार्ट योर प्रिपरेशन हियर and I think you're going to be thanking your stars for this. So without wasting much time, let's get down to the next stage of this entire topic. देखो, मैंने नाम भी नहीं बताया कि मैं क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूँ. Just have fun. Those amongst you who want to join me on my Telegram channel, थोड़ी देर के लिए you can pause this video, go to take your mobile camera, scan this or use this code and reach the Telegram channel. This is me, Dr. Sidharth Arora. I've been teaching on Unacademy platform for the last 6 years, and I've been teaching UPSC aspirants for the last 1.5 decades. This is the track record of mine. Somewhere around this part, the watch time must have increased by now. And I'm a practicing advocate in the Supreme Court of India. I would be teaching polity, governance, international relations, and the optional subject of PSIR for all the UPSC aspirants. So अगर आप join करना चाहते हो, please feel free. There are a bunch of offers from Unacademy. You can utilize them. Remember, these are time-bound offers. 19,999 plus 12 months free extension. This is a limited period offer. Don't miss this. Use the code SIDLIVE, SIDLIVE, and you can take this offer right away. Also, please remember, there are amazing optionals available. Our best of the best educators are going to be teaching optional. It is available only for 8,499. बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, रीजनेबल है. इफ़ यू वांट टू रीड PSIRs, तो all I'll be teaching in bilingual methods, and my course will begin from somewhere around the end of June. So if you want to utilize all these offers, please don't forget the code SIDLIVE, SIDLIVE. इस कोड को यूटिलाइज करो एंड यू स्टैंड टू गेट ह्यूज डिस्काउंट्स एट Unacademy. सो डोंट मिस दिस. यूज द कोड SIDLIVE एंड लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी. आज का वीडियो मुझे पता नहीं है, सो दिस इज टुडेज वीडियो, टुडेज करंट अफेयर्स. सब लोग करंट अफेयर्स बोलते रहते हैं, सब लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं. आप YouTube का वीडियोस देखोगे, समरी देख रहे होंगे, करंट अफेयर्स के मैगजीन में आ जाएगा, कोई न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ा रहा है, कोई द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा रहा है. सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट फॉलो द सेम ट्रैक. आई जस्ट टुक अ रैंडम न्यूज़पेपर स्क्रीनशॉट एंड आई वाज एबल टू रीड प्रेसिडेंट मुर्मू promulgates ordinance to amend Jammu and Kashmir Reservation Act, implements 85% in Ladakh, excluding 10% EWS. So now, make no mistake about it, I am not teaching advanced polity students. तो आप इस बारे में मत चिंता करो कि जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट के बारे में पढ़ाएंगे. सर्टनली नॉट. 85% और 10% EWS का क्या मतलब है? सर्टनली नॉट. दैट इज नॉट माई आइडिया टुडे. माई आइडिया हियर इज
कि मेरा फोकस गया ऑन दिस वन वर्ड एंड दैट वन वर्ड वाज ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस क्या होता है, एंड दिस एक्चुअली बिकम्स वेरी क्रूशल फॉर मेकिंग अ फाउंडेशन ऑफ पॉलिटी। तो बिगिनर्स, most welcome. Please let us try and understand what is an ordinance. So I believe many amongst you ने ये word पहले भी पढ़ा होगा, but have you really understood it at least on a foundational purpose? So essentially ordinance होता क्या है? Let me just get this picture. So let me explain what is an ordinance. सबसे पहले don't confuse yourself. Essentially एक ordinance is nothing else but a type of law. तो जैसे एक नॉर्मल कानून होता है वैसे ही ऑर्डिनेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स नॉट मेक रॉकेट साइंस आउट ऑफ अ सब्जेक्ट। ऑर्डिनेंस एक तरह का लॉ ही होता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वुड कम दैट व्हाई वुड ऑर्डिनेंस बी पास्ड इफ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है? ऑफ कोर्स आमतौर पे हु मेक्स अ लॉ? आमतौर पे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ इज द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव बॉडी। सो पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना एट द लेवल ऑफ यूनियन। उसी तरह से एट द लेवल ऑफ द स्टेट, विधानसभा और विधान परिषद, द वन विच इज रेफर टू एज द स्टेट लेजिस्लेचर, उनका काम होता है टू मेक लॉ। बट आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, जस्ट पिक्चर दिस, राइट? कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई, आई एम जस्ट आस्किंग यू, इमेजिन अ पिक्चर कि एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है व्हेन यू नीड अ लॉ अर्जेंट, एक लॉ की अर्जेंट जरूरत है। ओके, नंबर वन कीवर्ड अर्जेंट। सेकेंड, वो लॉ पब्लिक इंपॉर्टेंस का एक लॉ इशू पर मुझे एक अर्जेंट लॉ की जरूरत है। फेयर इनफ, ये एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन आज पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर सत्र में नहीं है। इन अदर वर्ड्स वो सेशन में नहीं है। इन अदर वर्ड्स वो छुट्टी पे है, विच इज कॉल्ड एज अ रिसेस। अगर रिसेस में है पार्लियामेंट for the union or the state legislature for the state and public importance में urgently I need a law. Now what am I going to do? मुझे चाहिए ही चाहिए, but I don't have the parliament. I don't have the state legislature respectively depending upon whether we are referring to union or state. तो मैं क्या करूं? For that particular purpose एक mechanism बनाया गया है which is called as ordinance. कि ordinance में executive president at the level of the union और the governor at the level of the state law बना सकते हैं, law बना सकते हैं when the parliament or the state legislature, as the case may be, is absent, in the sense it is in recess, छुट्टी पे है, सत्र नहीं है, सेशन खत्म हो चुका है, but I need a law for urgent public importance, that is called as ordinance. Ordinance is just like any other law. उसी का है, लेकिन there are certain terms and conditions that are over here. So let's look at the definition. अब बड़े ध्यान से इसको definition से देखते हैं. So an ordinance is it's a temporary law. We'll come to it a bit in a while कि इसे temporary क्यों बोल रहे? Made by the president, when I'm referring to union level, made by the president of India when the parliament is not in session, छुट्टी पर है. It has the same force, the same effect as an act of the parliament. So वो सेम ही है, उसको आप एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह सोच सकते हो. देयर आर सर्टन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म्स एंड कंडीशंस, देयर आर इफ्स एंड बट्स, बट वील कम टू इट लेटर. अभी के लिए फॉर फाउंडेशनल पर्पसेस आप ऑर्डिनेंस को लॉ की तरह ही सोचिए. सो ये बनाया गया है एंड दिस पावर हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.
तो ये कुछ आर्टिकल्स यू शुड रिमेंबर. एक तो बहुत ईजी हो जाता है 1 2 3. सो यू कैन इजीली रिमेंबर 1 2 3 of the Constitution gives President the power to pass or promulgate an ordinance. And the point here is, you can also connect this that the governor के पास भी power है. Very similar, very parallel powers. Essentially the same effect. Just for the president, he is for the time being passing an ordinance, a temporary law when the parliament is not in session. You can just do mutatis mutandis, just change where necessary. President replace it with governor, parliament replace it with state legislature, and article 123 replace it with 213. Your work is done. You need not refer to governor's power of ordinance in a separate topic. You can just mix and match, just do a compare and contrast exercise. That should be more than enough. So essentially, these powers are parallel. President at the level of the union, governor at the level of the state. President will do it or utilize such power when the parliament is not in session. Governor will utilize this when the state legislature is not in session. But one thing which is common to both, ये तब होता है, ये तब पास किया जाता है या तब यूटिलाइज किया जाता है जब देयर इज अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. ये जो 3 words है, these are so crucial that your ordinance can be challenged in the court of law. Supreme Court में challenge किया जा सकता है on the grounds कि my lord, such an ordinance should never have been passed because where is the urgency, where is the public importance. As and when we go at an advanced stage, I will give you several examples in the history of India when ordinances have been challenged on the grounds कि it was not urgent and there was no public importance. But tab ka kaam tab. We will cross the bridge when we come to it. Now the point here is, let's get back to a very important definition. So first of all, sometimes urgent situations arise where immediate action is needed, but the parliament is not in meeting, as in not in session. In such cases, the president can issue an ordinance. Now, it is very important that all of you wrap your head around this कि ये president साहब अपनी मर्जी से नहीं करते. उनको यूनियन कैबिनेट यानी कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द सीनियर मोस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कैबिनेट बनाते हैं वो एडवाइस करते हैं. तो प्लीज रिमेंबर, प्रेसिडेंट साहब ने खुद ऑर्डिनेंस नहीं पास किया. प्राइम मिनिस्टर प्लस द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज द कैबिनेट, ने उनको एडवाइस किया एंड देन द प्रेसिडेंट गोज अहेड एंड promulgates these ordinances. He is not going to do it by his own discretion. This should be very, very clear. So particularly very important of what are the discretionary powers, etc. उस पर यहाँ क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान रखो. And can I replace this? Of course you can replace this. All right. So if I want to replace this, then I can replace president with the governor and the parliament with state legislature. Similarly, I can say on the advice of the state cabinet. So सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ just corresponding changes करो, your answers are done. Now the point that we had taken here, and I told you we'll come back to it in a while, that this is a temporary law because ultimately whose job it is to pass the law, किसका काम है to pass the law. Ultimately it is the work of the parliament at the level of the union और द स्टेट लेजिस्लेचर एट द लेवल ऑफ द स्टेट. तुमने क्यों अभी ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट कर लिया? बिकॉज अर्जेंट था, पब्लिक इंपॉर्टेंस था और उस टाइम पे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर वाजंट देयर. तो ऐसा थोड़ी ना है कि द अर्जेंट और पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऑर्डिनेंस वही परमानेंट हो जाएगा. जिसका काम है उसको करना ही पड़ेगा. सो वी विल वेट, हम ना इंतजार करेंगे. वी विल वेट टिल सच टाइम कि पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आ जाए या फिर स्टेट के लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा सेशन में आ जाए. सो उस टाइम जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में दोबारा आता है, द स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट को 6 वीक्स मिलते हैं रीअसेंबली के डे से. जिस दिन दोबारा से मीटिंग स्टार्ट होगी, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स स्टार्ट काउंटिंग 6 वीक्स. विद इन दैट पीरियड ऑफ 6 वीक्स
that ordinance will be introduced in the parliament or the state legislature, as the case may be. It will be debated, discussed, and voted upon. If the parliament, majority of the houses, as in the Lok Sabha or the Rajya Sabha, like an ordinary law, or the Vidhan Sabha and the Vidhan Parishad, like an ordinary law, they have to pass this ordinance. Then it becomes a real permanent law, an act of the parliament. Otherwise, it will lapse. वो जीरो हो जाएगा, वो खारिज हो जाएगा, वो null and void हो जाएगा. It is very crucial that you remember that ordinance will have an effect, but it will only be for a temporary purpose. Now let's do a bit of mathematics. मैंने बोला था parliament should be in recess, state legislature should be in recess, correct? What is the maximum time कि parliament or the legislature of the state can be in recess? As per the Constitution of India, as per Article 79 or Article 168 respectively, the maximum time that the House or the Parliament can be in recess, chutti, is maximum time is 6 months. Alright, so now understand this as a constant. 6 months is the maximum time recess hai. And I have just told you that from the day of reassembly, the parliament or the state legislature के पास 6 weeks है to be able to convert that ordinance or pass that ordinance into a law. So now do the maths. Imagine for a while that the president promulgates an ordinance on the first day of the chutti, the first day of the recess, the first day that the parliament is not in session. Imagine. So maximum time that the ordinance would be in force is the 6 months of recess plus the 6 weeks which is given to the parliament to debate, discuss and vote and make this into a permanent law. So if a question comes in UPSC exam, आपको UPSC पूछा कि what is the maximum duration, absolute stretch, maximum duration during which the ordinance can be in force. The question is, what is the maximum duration? So the maximum duration of the recess is 6 months, and the maximum time period within which the parliament must convert this ordinance, debate, discuss, vote upon and pass this into and make it into a law is 6 weeks. So your answer will become 6 months plus 6 weeks. So write it in these words, the exact words. Don't do mathematics apart from this. 6 months plus 6 weeks is the maximum time an ordinance can be enforced, be that at the level of the union or at the level of the state. Beautiful multiple choice question. You should know this question. So let's summarize the process. Number one, ordinance is a law. Mark my words. It is a law. It is a temporary law, and I have just told you. So let me just put it to your comment section. In your comment section, you will tell me what is the maximum duration till which an ordinance can be enforced, be it at the level of the union or at the level of the state. दूसरी बात याद रखना, when the legislature is not in session, तब पास किया जाता है. It should be urgent and public importance. That is very important. Also, please remember, because ये temporary है, it must be approved within 6 weeks of assembly. Else, अगर ये नहीं approve हुआ, this will lapse, it will go away. Also remember two constitutional articles. Article 123 provides such a power to the president, and Article 213 is providing this for the governor. Also remember, दोनों president and the governor are executives. So ये जो law pass कर रहे हैं, ये उस time के लिए ज़रूरी है. It does not mean that the executive का law permanently चलता जाएगा. The parliament or the state legislature को उसको pass करना ज़रूरी है after a certain period. Otherwise, it will render the entire concept of parliamentary democracy defunct, which is not going to be allowed. So ये अभी के लिए urgent requirement है, इसीलिए law बना दिया गया है, लेकिन parliament और state legislature को इसको pass करना ज़रूरी है. इस कमेंट का मैं इंतजार करूंगा. तुम मुझे एग्जैक्ट टाइम पीरियड लिख कर दोगे that what is the maximum duration for which an ordinance, be it at the level of the union or at the level of the state, be in force.
आई बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में इनको समझा दिया है. इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि आपको ऑर्डिनेंस समझ में आ जाए. वंस यू आर इन माई क्लास और व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर योरसेल्फ, तुम एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तब तुम्हें ऑर्डिनेंसेस के और डिटेल्स भी समझ में आ जाएंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर एबल, इफ यू वुड बी अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम यूपीएससी. बिकॉज यूपीएससी में इसी को कॉन्सेप्चुअली पूछा जाता है, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पूछे जाते हैं, बट वो तब करना जब ये टॉपिक्स फंडामेंटल्स एब्सोल्यूट कॉन्क्रीट तुमको बिल्कुल पक्का हो जाए. आई विल बी ब्रिंगिंग मोर सच टॉपिक्स. लेट मी नो इन द कमेंट्स ये तुमको कैसा लग रहा है. आई विल बी ब्रिंगिंग अगेन रैंडम टॉपिक्स, बट इससे ज़्यादा फाउंडेशन कोर्सेस में मत पढ़ना. पहले इसी को रिवाइज करना. मेक श्योर ये एब्सोल्यूटली सॉलिड हो जाए, देन गो हेड विद द एडवांस टॉपिक्स. आई होप यू हैव एंजॉयड. इफ यू लाइक, share and subscribe. I'll be happy teaching you. If you want to join Unacademy, please don't forget to use the code SIDLIVE, SIDLIVE. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.